आज हम देखेंगे काउंटर एरिया। काउंटर एरिया सरफेस देखने वाले हैं हम। ये देखो, ये काउंटर एरिया सरफेस है। सरफेस काउंटर एरिया क्रिएटिंग counter area non-stick operation. Widely separated counter lines indicate a gentle slope. Counter lines that are very close together indicate a steep slope. The direction of steepest slope on a counter is at right angles to the counter. Following are the characteristics of counter lines in surveying for reading counter maps. No two lines meet or intersect each other. In any case, all lines close themselves within the map boundaries or outside it. Milling operation based on area drive method. The milling machine drive mechanism include a main shaft or gear assembly and a machine part. The gear assembly includes a first gear and a second gear. The first gear is pin jointed to the main shaft so as to rotate with the main shaft. The second gear is operatively connected to the first gear. The milling process removes the material by performing many separate small cuts. This is accomplished by using cutter with many teeth, spinning the cutter at high speed, or advancing the material through the cutter slowly. Most often it is some combination of these three approaches. Creating counter area operation. The curve being of one dimension, its counter are points. The points of intersection of it with curves along each of which some quantity is constant, although it differs in magnitude from one curve to another. These points may be projected upon any line in the plane. Principle: counter lines do not cross each other or split. Widely spaced counter lines represent gentle slope. Closely spaced counter lines indicate steep slopes. Example: a flat top mountain in the center is surrounded by a cliff closely spaced counter on the west, south, east sides. ये देखो, defining cut direction, editing tool display, defining cut bonding, defining trim bonding. Trim surface is used to define the boundary of surface loaded in the surface data form to remove information that is not necessary by the design. If a large leader tile has been simply loaded, it only requires a certain part of it. To trim a surface, create two or more surfaces that intersect at one or more points, or create a surface that intersects with plane or has a sketch on its face. Click Trim Surface on a surface toolbar or click Insert Surface Trim. ये देखो, specifying cut angles, specifying directional steep. ओके, अभी हम NXCAM में देखेंगे। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट मैंने पहले से यहाँ पे बना के रखा है, और ये ऑब्जेक्ट पहले से बना के रखा है मैंने। इसको ओके बोलेंगे। ये देखो, पहले टूल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले टूल क्रिएट किया है। ये टूल मैंने पहले क्रिएट किया है, उसको ओके बोलेंगे। ये देखो, यहाँ पे टूल की पोजीशन हम यहाँ पे सेट कर देंगे, इसको ओके बोलेंगे। फिर यहाँ से वर्कपीस, ये देखो, ये पार्ट, ये देखो, ये वर्कपीस मैंने यहाँ ऐसे डिफाइन किया है। ये देखो, बाउंडिंग ब्लॉक लेके ये वर्कपीस डिफाइन किया है मैंने। और ये चेक, स्पेसिफाइड चेक में जाके ये देखो, ये मैंने चेक डिफाइन किया है, इसको ओके बोलेंगे। अभी क्रिएट ऑपरेशन में जाएंगे। देखो, यहाँ यहीं पे किया है मैंने। ये देखो, ये वर्कपीस है और ये कट एरिया है, ये सरफेस एरिया। ड्राइव मेथड में जाएंगे और यहाँ से सरफेस एरिया चूज करेंगे। यहाँ से एडिट होता है सरफेस एरिया। ये देखो, ये स्पेसिफाइड ड्राइव ज्योमेट्री है। यहाँ से ड्राइव ज्योमेट्री हम चूज कर सकते हैं। इसको ओके बोलेंगे। इसको ओके बोलने के बाद ये देखो, और ये नंबर ऑफ स्टेप और 10 रखना है। और ये देखो, डिस्प्ले कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। ये देखो, ये इस तरह से मटेरियल कट होगा। फिर इसको ओके बोलेंगे।
इसको ओके बोलने के बाद देखो मैं इसको जनरेट करती हूँ। इसको जनरेट करना है, ये देखो ये टूल पाथ क्रिएट हो गया है इसका। और यहाँ से मैं वेरीफाई करती हूँ। वेरीफाई करने के बाद देखो, ये देखो ये पूरी तरह से काट रहा है। ये देखो 3D डायनेमिक में देखना चाहोगे तो ऐसे दिखेगा। ये देखो 3D डायनेमिक में ऐसे काटेगा। इसको ओके बोलेंगे और इसको ओके बोलेंगे। ये है काउंटर सरफेस एरिया मेथड।